Yes, Assalamualaikum everyone. Welcome to the CxO Global Forum Soft Chat. CxO Global Forum is a knowledge sharing platform where ideas meet innovation, mentors meet startups, and the learning and ideas are scaled across the community. I'll be your host for the show. Alhamdulillah, I have a decade-long experience of running a digital agency and a software house. My personal forte lies towards startup consulting, marketing strategy training, UI UX building. As the name suggests, CxO Soft Panel is a casual discussion where we'll be inviting industry guests. We'll be having casual discussions on the IT, software houses, digital agencies, their growth, their challenges, their operations, the future prospects, और जो learnings हुई उस हवाले से discussion कर रहे होंगे. We have two very experienced guests today with us. To start off, we have Mr. Arif Samad. He's the design lead of Airlift Technologies. He has an extensive experience in UI and UX under his umbrella. He is also the member of Interaction Design Foundation. तो उनके साथ हमारे साथ हैं Ayaz Ahmed. He is the UX manager at Bykea right now. He has worked with NeaPay. He has worked with GeoTV. He is also certified Scrum product owner. So thank you so much आप दोनों का आने का. Really appreciate it. Thank you for having us here. Thank you. ठीक है. अच्छा, to start off the topic, we understand that user experience और user interface are two very different fields. जिसको हम देखते आए हैं कि there has been a debate कि आपको good user experience पे focus करना होता है या good user interface पे focus करना होता है. There's this debate going on. अगर हम बात करें डिज़ाइन की या इंटरफेस डिज़ाइंस की या कम्युनिकेशन डिज़ाइंस की, तो ये सारे एक ऐसे मैकेनिज्म्स हैं जो आप अपना मकसद जो है ना बेसिकली आप आगे अपने कस्टमर्स तक, अपने स्टेक होल्डर्स तक पहुंचा सकते हो. सोल्यूशन ओरिएंटेड डिज़ाइंस पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है. तो बिफोर वी स्टार्ट फॉर्मली इन द डिस्कशन ऑफ दिस पैनल, I would request Mr. Arif कि अगर आप थोड़ा सा अपने इंट्रोडक्शन दे सकें कि आपका क्या बैकग्राउंड रहा है इस हवाले से, क्या एक्सपीरियंसेस हैं. फिर I would request Ayaz as well. Then we'll dive in right to the questions. Okay, thank you, Safir. Thank you for giving me opportunity to talk on this platform. Okay, I have started my design career in 1999, and when I was in grade 9, I started from the Macromedia Flash. And then moving towards in 2006, I shift myself to the 2D graphics in Photoshop, Adobe Photoshop. From then till today, I am working in let's say we can say a UI designer or website designer. Just a fancy names, name ही change होते गए, but काम हम वही कर रहे हैं. But थोड़ा बहुत approach change हो गई है, human centered design और user experience and user centered design की तरफ हम लोग move कर गए हैं. I am also teaching in Indus Valley as an adjunct faculty for the interaction design. Inshallah, in 2020, in the end of 2022, you will see a purely UX design degree holder in Karachi. Indus Valley is the first time introducing interaction design degree, major in interaction design. So, and also I taught in Sarsi University for their continuing education program for 5 years. Now recently I'm working as a product designer and a design lead in Airlift Technologies. Zabardast. Thank you. ठीक है, As, if you can go next. Yeah. Ayaz, are you with us? आपका muted है. Yeah. Ayaz, you are on mute. Yeah, I think you're on mute. You are on mute. ठीक है, आई थिंक अयाज विल बी जॉइनिंग अस इन अ मिनट और सो. हम डायरेक्टली क्वेश्चन पे चलते हैं. इसके आगे जो हमारा क्वेश्चन है, मैं थोड़ा सा क्योंकि हमारा बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा ओवरऑल अभी डिस्कशन का यूज़र एक्सपीरियंसेस पे और इस पे, तो एक्सपीरियंसेस का एक जो बहुत मेजर जो पोर्शन होता है, जो मेजर पार्ट ऑफ द प्रोसेस होता है, वो रिसर्च होता है.
तो अगर हम रिसर्च की बात करें तो यूजर रिसर्च के लिए आपका क्या व्हाट्स योर आइडियल मेथोडोलॉजी इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट रिसर्च? देयर कैन बी मल्टीपल प्रोसेसेस. आपको क्या व्हाट्स योर गो टू स्ट्रेटजी यूजर रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से? देखें, देयर इज नो सच काइंड ऑफ यू कैन से स्टैंडर्ड इन द इंडस्ट्री. It can be vary from culture to culture, demographically change होता है. If you are researching some kind of thing like if I take an example from the Airlift, अगर मुझे Airlift की किसी consumer app के लिए या rider app के लिए मुझे research करनी है, तो मैं respectively उन्हीं user के पास approach करूँगा जो उसके real users हैं. If I take example from the rider app, so we continually go to their you can say location and ask them from the different perspectives from questions कि अगर हम ये feature नया ला रहे हैं, इस feature के अंदर आपको what you are looking for us to improve in that feature, इस feature के अंदर क्या होना चाहिए. अगर वो feature live हो चुका है या वो feature वो use कर रहे हैं, उस फीचर के अंदर उनको क्या कमी नजर आ रही है, क्या पेन पॉइंट्स हैं उनके, किस किस एफिशिएंटली तरीके से जो हमने फीचर सोच के उसको डिजाइन किया था, उसको बनाया किया था, क्या उसकी रिसर्च जो हमने पहले की वो सही थी या नहीं थी. ये डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन, कंपनी टू कंपनी, इवन कंट्री टू कंट्री, कल्चर टू कल्चर. तो इसके अंदर कोई स्टैंडर्ड नहीं है. बस वी हैव टू कंसिडर दैट हमें रिसर्च करनी है, वी हैव टू टेक द स्टेप टुवर्ड द रिसर्च. बिकॉज इन द इंडस्ट्री नाउ डिजाइनर्स ये करते हैं कि वो रिसर्च करने की फील्ड के लिए कौन उतरे, कौन जाए, हम एक दूसरे की उसमें लगे हुए होते हैं कि आप पहले ये जाएगा तो मैं देख लूंगा. नहीं, हमें खुद आई थिंक ये स्टेप लेना पड़ेगा. डिजाइनर्स को चाहिए कि वो खुद स्टेप इन हो और सबसे पहले रिसर्च करें, ना कि फौरन ही जो है वो कैनवस के ऊपर जो है वो जंपिंग करने के बाद वाई फ्रेमिंग टूल या डिजाइन टूल, कोई भी फिग्मा का कोई भी टूल यूज करके उसको डिजाइन करें. रिसर्च इज अ very you can say important part. इसको हम omit नहीं कर सकते किसी भी बेहतरीन यूजर एक्सपीरियंस और किसी भी अच्छी एप्लीकेशन की सक्सेस की. ठीक है, जबरदस्त. थैंक यू सो मच. आई थिंक अयाज इज बैक विद अस. अयाज, अगर आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे सको, अ बिट ऑफ बैकग्राउंड अबाउट योरसेल्फ, और फिर उसके बाद फिर वी कैन मूव फॉरवर्ड टू द क्वेश्चन. I think there's a problem with your internet connection. I think there is some problem with his connection. Let's move forward with the discussion. User research की हमने बात की कि किस तरीके से करना है. User research में जो एक बहुत ज़्यादा important aspect आता है, जो कि usually institutions या certifications में बहुत ज़्यादा focus किया जाता है जिस चीज़ पे, that is called design thinking. And I'm very sure कि जो अक्सर जो processes होते हैं, not in terms of the designing itself only, इसके अलावा भी दूसरे processes alignment के लिए design thinking is a very very important tool जिसको जहन में रखना चाहिए all the interaction and communication designers को. तो उसके बारे में क्या आपके comments होंगे? Do you feel कि is this a very core part of the whole research process? इसका जो step by step approach है, उससे किस हद तक solutions निकालने में आसानी हो जाती है? Safir, I cannot hear you clearly. I cannot hear you clearly. अच्छा, we were discussing about design thinking, कि जो user research का एक बहुत important aspect होता है. तो what are your views about this design thinking and the process and the methodology? Safir, there is a lag between your I think there is. I think there's a problem here. Safir, can you hear me? Yeah, I can hear you. I can occupy this time to introduce myself finally. ठीक है. So मैं Bykea में user experience manager हूँ. I come from a marketing background. So मैंने IBA से BBA और MBA किया marketing में. Then I moved to UI UX some 4 years ago. Then eventually stumbled upon technology and product management. So it's a very exciting place to be amidst all the focus that the technology startups are attracting these days. मैंने Bykea 1 साल पहले ज्वाइन किया था. During this time I have built and launched Bykea Food. या इसको हम Bykea मज़े कहते हैं. Now working on the new deals vertical at Bykea.
Before this, I was a CX manager or customer experience manager at Nayape. So earlier last year, I got the opportunity to design a multilingual website for Retailo. I work with several startups and companies. So when COVID struck last year, the government of Pakistan formed a task force, जिसका मकसद ये था कि कोविड से कैसे निपटा जाए, what digital interfaces should the government come up with to reduce the load on hospitals, for example. तो जो गवर्नमेंट ने एक सेल्फ असेसमेंट चैट बॉट लॉन्च किया था, that was my design. So to sum up, I'm a product manager with a strong background in user experience and design, and a passion to deliver great products. Yeah. जबरदस्त जबरदस्त. अच्छा, मूविंग ऑन टू दिस यूजर रिसर्च और इस पूरे प्रोसेस को ध्यान में रखते हुए, व्हाट आई हैड अ क्वेश्चन अर्लियर वाज, देयर इज अ लॉट ऑफ रिसर्च इन्वॉल्व्ड इन बिल्डिंग प्रोडक्ट्स. बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड रिसर्च एंड सर्वेज एंड व्हाट नॉट. इस पूरे प्रोसेस में जो एक कोर एस्पेक्ट है थॉट प्रोसेस का, विच इज कॉल्ड डिज़ाइन थिंकिंग, वो अक्सर जो डिज़ाइनर्स हैं या जो प्रोडक्ट ओनर्स स्पेशली, वो इसको मिस कर देते हैं. तो what are your views on design thinking? क्या ये बहुत important है? किसी जो स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है कितना ज़्यादा सॉल्व कर लेती है हमारी सारी चीज़ें? अच्छा, डिज़ाइन थिंकिंग बज़ाहिर लगता है कि ये कोई टर्म है और ये कोई I think स्ट्रक्चर there is डिजिटल कोई a lag प्रोसेस है. between streamline. जी जी यस जी या. But first of all, we need to understand what design thinking में process होता है. पहले empathize करते हैं, फिर define, ideate, prototype, test. This is a framework. So first of all, we need to understand and communicate within the organization that UX development is a complex process, and there has to be some framework in place to guide the process. So design thinking provides that framework or structure to it. So there is a reason why some of the world's top organizations, including Google, use design thinking in their design process. I think it is by emphasizing the benefits design thinking brings to the table that we can inculcate more and more application of design thinking at our workplaces. To the short answer to your question is, it is. I believe I exercise it in my working, and I think more and more designers should consider it as something that they should do to structure their work. ठीक है, great great. अच्छा, when we talk about Arif साहब, this question would be for you. When we talk about organizations, the organizations we see that there are multiple roles of designers working on the same task, on the same project, जिसमें communication भी आ जाती है, जिसमें interaction भी आ जाती है. How do you collaborate? What tools do you use? How do you ensure that this collaboration is seamless? Again, I think that there is some serious issue within the internet right now. So Ayaz, if you could answer this. श्योर. सो आपके क्वेश्चन के दो पार्ट हैं. एक तो ये है कि डिज़ाइनर्स किस टाइप के होते हैं. सो UI UX की स्पेसिफिकली बात करें, सो यू हैव योर UI डिज़ाइनर्स, देन UX डिज़ाइनर्स, देन इंटरेक्शन डिज़ाइनर्स, और ब्रॉडली बात करें सो दे आर ग्राफिक डिज़ाइनर्स. सो जब हम किसी एक वर्टिकल में काम कर रहे होते हैं, किसी बिजनेस यूनिट में काम कर रहे होते हैं, सो देयर दीज मल्टीपल टाइप्स ऑफ डिज़ाइनर्स. अगर बाकी एक एग्जांपल दें, सो देयर इज़ अ न्यू वर्टिकल कॉल्ड डील्स. सो उसमें सो वी नीड अ लॉट ऑफ आर्ट वर्क टू पुट अप डील्स. सो उसके लिए ग्राफिक डिज़ाइनर है. देन वी नीड अ UI UX डिज़ाइनर टू कंस्ट्रक्ट द एप्लीकेशन और द इंटरफेस जहाँ पे यूजर्स आके ऑर्डर प्लेस करेंगे. सो वी नीड अ UI UX डिज़ाइनर देयर. फिर आपका दूसरा सवाल था टूल्स क्या होते हैं. सो इट डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ द डिज़ाइनर. सो आरिफ साहब ने जैसे मेंशन किया था, अगर ग्राफिक डिज़ाइनर हैं तो उनके वही रूल्स होते हैं, दे यूज इलस्ट्रेटर एंड फोटोशॉप. बट अगर UI UX की तरफ आ जाते हैं, सो पीपल आर मूविंग मोर टुवर्ड्स एडोबी XD या फिग्मा. सो माई पर्सनल प्रेफरेंस वुड बी फिग्मा. The collaboration में ये tools, so the tools are themselves helping teams or multiple designers collaborate with each other. So you can multiple teams or multiple designers, even sitting in different cities, can work on the same project in Figma, for example. ठीक है, sounds fair. अच्छा, when we talk about collaboration among all the teams, किस तरीके से चीज़ें चल रही होती हैं, तो what do you think एक standardized, क्योंकि you both are working in top class in production level applications पे काम हो रहा है, बड़ी teams हैं जिसमें multiple stakeholders involved हैं, और जो प्रोडक्ट का जो लाइफ साइकिल है वो बहुत ज़्यादा लंबा होता है when it comes to the product itself. So how do you ensure that the standardization is followed? This, I think, the design systems, the term design systems comes in over here.
तो डिज़ाइन सिस्टम्स को किस तरीके से आप लोग मेक श्योर करते हैं कि ओवरऑल अक्रॉस द बोर्ड, अक्रॉस द कंपनी, अक्रॉस ऑल द प्रोडक्ट्स सारे डिज़ाइन सिस्टम्स स्टैंडर्ड हों और सारी चीज़ें फॉलो हो रही हैं? आरिफ साहब। ठीक है, आरिफ साहब, कैन यू हियर मी? I think he cannot hear us. Ayaz, again, this question comes to you. Design systems की बात हो रही Okay. है. Design systems किस तरीके से We are आप using the make tool. Yes, again. We are using tool Figma, which is very best tool for the collaboration between designers and PM. ठीक है, can you hear us? I can hear you. Okay, ठीक है. I think Arif साहब has disconnected again. Interestingly, ठीक है, डिजाइन सिस्टम्स पे क्या इनपुट देना चाहेंगे आज? अभी देखिए अभी हम I can कोलैबोरेशन से हट के थोड़ा सा इसकी इंपॉर्टेंस पे बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारी टीम्स ऐसी हैं जो शायद इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं या इस चीज़ को इतना फॉर्मली नहीं चला सकते हैं. तो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में कितना इंपॉर्टेंट होते हैं डिजाइन सिस्टम्स? देखिए I can illustrate the importance with an importance of a design system with an example. So imagine करें कि एक कंपनी है, एक ऐप है लाइक Bykea, उसके 3 वर्टिकल्स हैं, सिंपल इसको एग्जांपल लगता है, या एयरलिफ्ट भी है अगर, उसके 3 वर्टिकल्स हैं, हर एक की अपनी टीम है, हर एक के अपने प्रोडक्ट मैनेजर्स हैं, हर एक के अपने डिजाइनर्स हैं. सो एंड ऑल 3 वर्टिकल्स अपीयर ऑन द सेम ऐप, बट उस कंपनी का डिज़ाइन सिस्टम नहीं है कोई. So since designing is subjective, all 3 product designers will be designing their verticals in their own respective styles. So the result will be a totally different look and feel between the 3 verticals on the same app. So मिसाल के तौर पे एक वर्टिकल में जाते हैं तो सर्च आपको ऊपर बनी नज़र आती है, दूसरे वर्टिकल में आप जाते हैं तो सर्च पे एक आपको नेविगेशन, बॉटम नेविगेशन में नज़र आती है. So this puts extra cognitive load on the minds of the users. उसको हर जर्नी नई तरीके से सीखनी पड़ती है. So इसकी जो कॉस्ट है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ नॉट इन्वेस्टिंग इन अ डिज़ाइन सिस्टम इज़ ह्यूज. ये तो एवरी कंपनी शुड कंसिडर इन्वेस्टिंग सम टाइम. मुश्किल है, डिज़ाइन सिस्टम बनाना आसान नहीं है, सो उसमें टाइम लगता है, बट इट्स वर्थ इन्वेस्टिंग इन. उसको जो इग्नोर करके डिज़ाइन सब काम एड हॉक शुरू करते हैं, सो आई थिंक दैट कॉस्ट मोर इन टर्म्स ऑफ यूजर एक्सपीरियंस. Makes sense. I think perfect answer to this. इसी के साथ साथ, अच्छा, अभी तक हम जितनी भी डिस्कशन कर रहे थे वो डिस्कशन कर रहे थे ऑन सेट एप्लीकेशंस, जो कि एप्लीकेशंस बन चुकी हैं और उसको मेंटेन किया जा रहा है या उसको आगे बढ़ाया जा रहा है. व्हेन इट कम्स टू कमिंग इन एंड काइंड ऑफ वर्किंग ऑन न्यू एप्लीकेशंस, जो कि नए आइडियाज़ होंगे, नए बिजनेस होंगे जो एप्लीकेशंस लॉन्च कर रहे हैं, जिसका आपको डिज़ाइन सिस्टम या आपको प्रोडक्ट आइडिएशन शुरू से करनी होती है इन टर्म्स ऑफ द यूज़र एक्सपीरियंस एंड यूज़र इंटरफेस. उसकी जो रिसर्च होती है उसका एक सेपरेट प्रोसेस है. रिसर्च के बाद देयर कम्स दिस द यूजर इंटरफेस वाली चीज. तो देयर इज दिस टर्म कॉल्ड कलर साइकोलॉजी, कि जो कलर साइकोलॉजी मैटर करती है व्हेन इट रिलेट्स टू द डिजाइन, इट रिलेट्स टू द ऑडियंस, इट रिलेट्स टू द प्रोडक्ट इटसेल्फ. क्या बैकग्राउंड होता है, क्या थॉट प्रोसेस होता है इस पूरी डिस्कशन, इस पूरी जो डिसीजन होता है कलर साइकोलॉजी के पीछे, क्या थॉट प्रोसेस रखता है आप लोग? देखिए, कलर साइकोलॉजी कहती है कि कलर्स का इम्पैक्ट होता है ऑन हाउ यूजर्स परसीव योर ब्रांड और इंटरफेसेस, बट इट गोज डीपर दैन दैट. बाज़ लोग ये समझते हैं कि कलर हम रेड रख देंगे तो हमारी ब्रांड की पर्सनैलिटी इस तरह अच्छी डिफाइन, एनर्जेटिक डिफाइन हो जाएगी, या ग्रीन रख देंगे तो बहुत ही इको फ्रेंडली डिफाइन हो जाएगी, बट देयर इज डीपर मीनिंग इनटू इट. So yes, blue inculcates a feeling of trust and use by financial products. Red represents energy and passion. Orange represents playfulness. Green represents calmness, etc., etc., etc. But when deciding on a color combination, there are multiple other factors that must be also kept in mind, such as
the colors used by the competitors. कि अगर सारे competitor आपके red color use करते हैं, तो do you want to stand out or do you want to gel in? I don't have an answer to it. Maybe your goal is to gel in with the competitors, so you might go for the red color. और another factor would be कि आपके जो कलर्स हैं वो कहाँ यूज़ होंगे. सो फॉर एग्जांपल आपकी कोई ऐसी प्रोडक्ट है जो कि शॉप एशिया पे लगी होगी. सो आप मार्केट विजिट करके देखें कि एक आपकी जो टारगेट मार्केट है जहाँ पे दुकानों में आप भी चाह रहे हैं कि आपका बोर्ड भी लगाओ, वहाँ पे सारे ऑरेंज कलर के बोर्ड्स हैं. अगर आप भी ऑरेंज लगा देंगे, सो दैट माइट नॉट स्टैंड आउट. So color psychology is there and there are meanings to colors, but there are many other factors as well that we discuss. आपने पूछा हम क्या डिस्कस करते हैं, so we discuss these things before deciding on a color, क्योंकि इसके repercussions बहुत long term होते हैं. आप ब्रांड कलर एक दफ़ा डिफाइन करते हैं, and it is very costly to change your colors again and again. So every design department needs to spend a lot of research and time before locking on a color. Okay, great. Arif Saab, are you back here? Can you hear us? Yeah, I can hear you. फाइनली ऑलराइट. अच्छा, हमारी कलर साइकोलॉजी पे बात हो रही थी. आपका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है इस हवाले से, क्योंकि यू हैव स्टार्टेड वर्किंग विथ मैक्रोमीडिया. फ्लैश से शुरू हुआ, फिर पूरा एक जो जनरेशन थी जो पूरी ट्रांसफ़र हुई, फिर फोटोशॉप वाला टाइम आया, फिर उसके बाद अब यूज़र इंटरफेसेस, यूज़र एक्सपीरियंस और ये सारे ट्रेंड्स की बात होती है. कलर साइकोलॉजी को किस तरीके से रेट करेंगे आप? कितना ज़रूरी है कलर साइकोलॉजी इस पूरे प्रोसेस में? मेरे ख्याल से आज आरिफ साहब से बात नहीं हो पाएगी इस प्लेटफॉर्म पे. ठीक है, हम आगे चलते हैं, दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं. अभी बात हो रही है ओवरऑल ट्रेंड्स की. कलर साइकोलॉजी की हमने बहुत ज़्यादा स्पेसिफिकली डिस्कशन की कि क्या चीज़ जहन में रखते हैं. अगर हम बात करें ट्रेंड्स की, तो वी आर सीइंग कि ट्रेंड्स बहुत ज़्यादा जल्दी चेंज हो रहे थे इन टर्म्स ऑफ द यूज़र इंटरफेसेस. स्पेशली देयर वाज अ टाइम जब मिनिमलिज्म पे बहुत फोकस किया जा रहा था, फिर ग्लास मॉर्फिज्म आ गया, फिर उसके बाद क्ले मॉर्फिज्म आ गया, और पता नहीं कितने किस्म किस तरह के ट्रेंड्स आ गए. तो एक तो ये कि इन ट्रेंड्स को किस हद तक फॉलो करना चाहिए. ऑफ कोर्स फॉलो करना सबके लिए ज़रूरी, लेकिन किस हद तक यू शुड इनकॉर्पोरेट दिस इन अ डिज़ाइन. लेट्स से अगर आप किसी प्रोडक्शन लेवल ऐप पे काम कर रहे हैं, तो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर यू टू एक्चुअली गो एंड चेंज द डिज़ाइन सिस्टम एज पर द लेटेस्ट ट्रेंड्स एवरी नाउ एंड देन. तो इसको किस तरीके से चलाया जाए? So this is a question for me, right, Sophia? Yeah. Yes, right. So you are right, डिज़ाइन ट्रेंड्स हैं और वो तकरीबन हर साल ही चेंज हो जाते हैं. अगर बहुत ही हाई लेवल बात करें, सो पहले देयर यूज्ड टू बी फ्लैटर डिज़ाइंस पे बीच में ग्रेडियंट आ गया था. फिर देन द वर्ल्ड वाज अगेन मूविंग टू फ्लैट डिज़ाइंस. सारी कंपनीज ने अपने फ्लैट लोगो वर्जन्स इंट्रोड्यूस करवाए थे 2 साल पहले. बट नाउ द वर्ल्ड इज़ मूविंग अगेन टुवर्ड्स ग्रेडियंट्स, बिकॉज उसकी काफ़ी वजूहत हैं. सो अगर हम सिर्फ इसी की बात करें, फ्लैट डिज़ाइन ट्रेंड की, सो पॉसिबली ग्रेडियंट जो होते हैं वो ज़्यादा फाइल साइज़ लेते हैं, वो लोडिंग में भी देर लगाती हैं. बट अब मोबाइल जो आ रहे हैं उनकी प्रोसेसिंग पावर ज़्यादा होती है. सो प्रॉब्ली फंक्शनली जो एक बॉटलनेक बना था 2 साल पहले, प्रॉब्ली अब वो नहीं है. So companies are moving back towards gradients. Another trend would be dark mode. So dark mode was very popular this year. जितनी popular apps हैं, they introduced their dark modes. इस साल भी they will continue to prevail because उससे बैटरी टाइम भी बचता है, cognitive load भी बचता है यूजर्स की आंखों के ऊपर. Then there's claymorphism. Then your question was कि क्या हमें देखना भी चाहिए, ट्राई करना भी चाहिए कि नहीं. ट्रेंड्स तो बहुत सारे होते हैं. So उसका जवाब ये है कि so there might be certain design styles that appeal to a certain audience. जैसे मिसाल के तौर पे claymorphism might appeal to Gen Z audience, but I'm just making it up. मिसाल के तौर पे Bykea के audience फर्ज करें Gen Z नहीं है अगर, so the claymorphism doesn't make sense to Bykea. Similarly, जब नए ट्रेंड्स इस साल और जो आई फोर्सी आएंगे, वो एनिमेशंस आएंगी ऐप्स में और इंटरफेसेस में, वेबसाइट्स में, और माइक्रो इंटरेक्शंस आएंगी. अगेन ऐप्स और एनिमेशंस और माइक्रो इंटरेक्शंस पिछले साल या उससे पिछले साल ऐप्स में इतनी कॉमन इसलिए नहीं थी क्योंकि लोगों के जो फ़ोन होते हैं उनकी प्रोसेसिंग इतनी ज़्यादा नहीं होती है. तो people were worried that if they include animations in their interfaces, the lower end phones might get hung or something. So animations would definitely be increase. A typography का एक trend है. So
सो पिछले साल ऐसा ऐप्स इस तरह बन रही थी जैसे वर्ड डॉक्यूमेंट लिखा होता है, नोटपैड पे लिखा होता है, बट वी आर सीइंग इंक्रीजिंगली कि वो एक बहुत ही बोल्ड हेडिंग्स होती हैं एंड इन योर फेस टाइपोग्राफी होती है. um, and I think illustrations are coming back in user के onboarding में, even empty states में और error states जो होते हैं. So just to explain, empty states वो states होती हैं, for example आपकी app का एक filled version होता है, for example अगर अगर बाइकिया की ऐप है, सो आपने कोई पिछली बुकिंग सारी की हुई है तो एक पेज के ऊपर आ रही हैं वो, लेकिन क्या पता किसी यूज़र ने कोई भी बुकिंग ना किया हो तो आप उस पेज पे क्या शो करेंगे, तो दैट वुड बी एन एम्प्टी स्टेट. The error states हैं, so illustrations are filling up these spaces this year. Then फिर augmented reality और virtual reality आ रही है. We know कि Facebook ने अपना नाम चेंज करके मेटा कर दिया है. We know they are where they are going. वो metaverse बना रहे हैं. I think this will have a ripple effect on the companies all over the globe, and इस पे काफ़ी काम होगा. एंड लास्टली जो मुझे सबसे इम्पोर्टेंट लगता है कि ऑल कंपनीज, पहले तो कुछ डिजिटल कंपनीज का थोड़ी बहुत होती थी, वो एक्सपीरियंस जैसे भी होता था, लोगों की नीड पूरी होती थी तो लोग वो यूज़ करते थे, बट नॉट एनी मोर. पीपल हैव मल्टीपल ऑप्शंस फॉर टू फुलफिल एवरी kind of a need. So companies will increasingly focus on personalized experiences, and what do you call it, frictionless onboarding. अक्सर ऐप्स में आप जाते हैं तो वो कहता है कि आप साइन अप ना करें, आप गूगल से साइन इन कर लें. It's increasingly difficult to let users into your app. यूजर्स को अगर आप एक दो स्टेप ज़्यादा दिखाएंगे तो वो छोड़ के आपको किसी कॉम्पिटिटर के पास चला जाएगा. Makes So sense. I think frictionless authentication and personalized experience, I think, are the things that we need to keep our eyes open for this year. Great, Zabardast, Zabardast. Acha, if we talk about consistency, there can be multiple types of user interfaces एक ही application के. कुछ interfaces उसके web से relate करते होंगे, कुछ interfaces होते हैं जो mobile site से relate करते हैं. Mobiles में भी बहुत सारी ऐसी अब technologies आ रही है, foldable phones आ रहे हैं, let's say, जो एक पुराना trend था जो कि अब revive हो रहा है. तो there are foldable phones, there are, let's say, flat phones, there are small screen phones, large screen phones. How do you make sure that consistency stays the same across the board, across all the versions of your application? Because working on a production level application, working on an application जो कि जिसके इतने ज़्यादा end users हैं, इतने ज़्यादा customers, इतने ज़्यादा stakeholders हैं और multiple platforms पे access कर सकते हैं. I'll give you an example of myself. When I use Food Panda, majority of the time I use my desktop website application. लेकिन कभी ऐसा होता है कि मैं अपने मोबाइल से भी ऑर्डर करता हूँ, लेकिन the experience that I receive is the same. So the question over here is, how do you ensure that all the experiences remain the same across all the devices, all the platforms, basically? Interesting question, and this is actually a challenge. कुछ सालों पहले तक the answer was straightforward to this कि आप जब डिज़ाइन कर रहे होते हैं, सो आप एक इंटरफेस बनाते हैं मोबाइल का एंड देन एक इंटरफेस बनाते हैं डेस्कटॉप का. सो पहले डेस्कटॉप फर्स्ट इंटरफेसेस बनते थे, लेकिन देन वी रियलाइज के 90% ऑफ योर यूजर्स आर मोबाइल यूजर्स, तो फिर मोबाइल फर्स्ट इंटरफेसेस बनने लगे. नाउ ऑल दीज डिवाइसेस आर कमिंग, फोल्डेबल फोन्स आ रहे हैं, टैबलेट्स आ रही हैं. सो whatever product, digital product we design, so वो we शायद कम चैलेंज होता है डिज़ाइनर्स के लिए, डेवलपर्स के लिए और भी ज़्यादा चैलेंज हो जाता है. बर्ड्स को उसकी दे हैव टू इंश्योर दैट जो उसका इंटेंडेड प्रोटोटाइप जिस तरह थी बिल्कुल वैसे ही फिनिश प्रोडक्ट भी लगे. सो देयर इज़ नो आई थिंक शॉर्टकट, एटलीस्ट दैट आई नो ऑफ, टू सर्कमवेंट दिस. बट जितनी भी ज़्यादा डिवाइसेस पे आप चाह रहे हैं कि आपकी टारगेट मार्केट आती है और उसको यूज़ करे आपके प्रोडक्ट को, यू नीड टू बी एबल टू डिज़ाइन अकॉर्डिंग टू दैट डिवाइस. बट स्टार्टिंग पॉइंट आप फिगर कर सकते हैं कि if you want to design a mobile first interface तो आप मोबाइल से स्टार्ट करें and then carry it forward from there. Your design system helps here. आपने जो पहले पूछा था, तो अगर आपने डिज़ाइन सिस्टम ऐसा रोबस्ट बनाया हुआ है उसमें आपने स्टिकर कैन ड्रॉप, so you should not have a problem in designing for multiple devices. मेरे ख्याल से I agree completely on this, because as an agency हमारे पास clients हैं who are running their e-commerce stores, and their products may range from above 50,000 to 70,000 rupees per product. और उनकी भी जो maximum sales है, we have seen the stats, we have seen the analytics. Majority, in fact, if I can give you a number, it's like more than 95% of the sales
of their products comes through this mobile phone applications या mobile phone based browsers. तो जो mobile first approach के जो आपने बात की, I think that's completely valid. We'll move towards the closing of the session. आखिरी चीज़ जो कि एक किसी भी डिज़ाइनर के लिए, किसी भी UI UX पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते है, वो एक ट्रेंड्स के साथ कीप अप करना तो है, इसके साथ साथ अपनी सर्टिफिकेशंस को या अपनी लर्निंग को बढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो व्हाट लर्निंग प्रैक्टिसेस या व्हाट बेसिकली लर्निंग मटेरियल या सर्टिफिकेशंस या इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जो आप रेकमेंड कर सकते हैं कि जिसमें लेट्स से इंडिविजुअल्स वहाँ से सर्टिफिकेशंस या ट्रेनिंग्स लेके अपना स्किल सेट तो ऑफ कोर्स एनहांस कर ही सकते हैं, इंडस्ट्री में भी अपने आप को एक एज दे सकते हैं बेसिकली. I would say hands down, the professional certification by Google on UX design is the best out there in my opinion. It is अच्छा उन्होंने डिज़ाइन किया, it's a 7 month long course by design. So उसमें 7 मॉड्यूल्स हैं, हर मॉड्यूल अप्रॉक्सीमेटली 1 महीने का है, 1 week plus minus. So it is one of the 3 professional certifications that Google launched last year. The other 2 are project management and data analytics. So वो कोर्स एक्चुअली अज्यूम करता है कि आपको पहले कोई भी इसकी नॉलेज नहीं है, एंड इट टीचेस यू अबाउट यूएक्स डिज़ाइन प्रिंसिपल्स एंड बिल्ड्स बेसिक कॉन्सेप्ट फ्रॉम स्क्रैच, एंड देन ग्रेजुअली इंक्रीजिंग डिफिकल्टी लेवल. तो उसमें आपको डिज़ाइन की भी सेंस बताता है, टाइपोग्राफी कैसी होनी चाहिए, कलर्स कैसे आप यूज़ करें, लेआउट कैसा होना चाहिए. सो इट हैंड होल्ड्स यू. वो बहुत अच्छा कोर्स है. आई वुड रिकमेंड एवरीबडी हु इज वाचिंग दिस टू गो एंड एक्सप्लोर दिस कोर्स. ठीक है, ज़बरदस्त. Thank you so much, Ayaz. Arif साहब, thank you so much as well. I understand there were network issues from your end. I personally learned a lot. I would have loved कि अगर Arif साहब भी अपने inputs दे सकते हैं यहाँ पे, लेकिन thank you so much, Ayaz, to take out time. I had a couple of more questions, but unfortunately अभी हमारे पास time थोड़ा सा short है, लेकिन we'll connect inshallah again. Thank you so much for joining. See you guys next week inshallah. Allah Hafiz. Thank you. Allah Hafiz. Thank you. Allah Hafiz.